Hello everyone, good morning. राइट तो आज अपन डिस्कस करने वाला है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। एक्चुअली कल क्लास में कुछ पार्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में है ना बॉटम अप पार्सिंग का एलआर पार्सिंग का कुछ डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट जो है पार्सिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके राइट। तो मेनली बॉटम अप पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई अपन फर्स्ट है ना बॉटम अप पार्सिंग को थोड़ा क्लियरली समझ के है ना बाद में विल गो फॉर दिस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए ऑडियो वीडियो में। ओके सो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पार्सिंग। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है सिंटैक्स एनालिसिस फेज का नेक्स्ट उसके बाद में जो आने वाला प्रोग्राम है। ओके थैंक यू, थैंक यू। सेमांटिक एनालिसिस, एक्चुअली सेमांटिक एनालिसिस इज द थर्ड प्रोग्राम। यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है कंपाइलर में? थर्ड प्रोग्राम सेमांटिक एनालिसिस है। तो सेमांटिक एनालिसिस प्रोग्राम जो है ना वो प्रोग्राम पूरा पार्सर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एंड सेमांटिक एनालिसिस प्रोग्राम जो है सेमांटिक एनालिसिस फेज बोलते हैं। सेमांटिक एनालिसिस दैट डिटेक्ट सेमांटिक एरर्स चेक करने के लिए है अपने पास। तो वो उसका डिजाइन करने के लिए सी पार्सर डिजाइन करने के लिए अपन क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे? पार्सर्स डिजाइन करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, पार्सिंग एल्गोरिथम। कल क्लास में देखे थे LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। लाइक दिस सिमेंटिक एनालिसिस डिजाइन करने के लिए कौन सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होगा? टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो पार्सर डिजाइन करने के लिए ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होगा। एंड देन अपन को यूज होगा पार्सिंग। तो पार्सिंग ऑलरेडी आपको आइडिया है, ठीक है? दैट्स वाई पार्सिंग को और है ना बॉटम ऑफ पार्सिंग को और क्लियर कर लेते। तो लास्ट क्लास में हैंडल डिटेक्शंस ये पूरा। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैंडल डिटेक्शन से पूरा बॉटम ऑफ पार्सिंग कैसा वर्क हो रहा है वो पूरा देखे थे। तो अपन आज क्लास में है ना डिस्कस कर लेंगे बॉटम अप पार्सिंग और क्लियरली शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग, LR पार्सिंग कैसा चलेगा, तो इसका क्या टेक्निक्स है। एंड देन वील मूव ऑन टू सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। दिस इज आवर टुडेस एजेंडा। ओके ठीक है। कोई कल क्लास में कोई डाउट्स है किसी को अभी तक जो कंप्लीट हुआ था टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग कल क्लास में? कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स? ठीक है। सो लेट अस गो एंड स्टडी दिस LR पार्सिंग। सो लास्ट क्लास में अपन बॉटम अप पार्सिंग, तो आज sometime we'll discuss about bottom up parsing, then we'll discuss about STT। बॉटम अप पार्सिंग ऐसा चल रहा है, इट कंस्ट्रक्ट्स द पार्स ट्री फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कंस्ट्रक्ट्स ए पार्स ट्री फॉर इनपुट स्ट्रिंग beginning at leaves and working up towards the root, beginning at working up towards the root here। सो बॉटम टू टॉप का मतलब वही हो, बिगिनिंग एट स्ट्रिंग, लीव्स मतलब स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल तक। सो दैट्स वाई बॉटम अप पार्सिंग। ऐसा क्यों? ऐसा स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम कर सकते हैं ना, वो दैट इज टॉप डाउन पार्सर। तो ऐसा टॉप टू बॉटम आने से पावरलेस हो रहा है। तो बॉटम अप क्या बोल रहा है अपन को? थ्योरेटिकल स्टडीज, अपना स्टडीज क्या बोल रहा है? बॉटम अप पार्सर्स मोर पावरफुल। ऐसा बॉटम टू टॉप जाने से अच्छा है, दिस इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर। दैट्स वाई bottom to top algorithms constructed to design parsers। ठीक है, ये वर्क कैसा होगा? बॉटम अप पार्सिंग इज मेनली वर्किंग बेस्ड ऑन हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म। बॉटम अप पार्सर जो है मेनली हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म से वर्क होगा। सो दिस प्रोसेस इज
एज रेड्यूसिंग, कल देखे थे ना अपन रेड्यूस, तो हैंडल डिटेक्ट कर लेते, कभी हैंडल डिटेक्ट हो गया रेड्यूस कर लेते, दिस इज। एंड बॉटम अप पार्सर्स यूजेस राइट मोस्ट डेरिवेशन, एक्चुअली राइट मोस्ट डेरिवेशन ही है, बॉटम अप पार्सर जो यूज करेगा वो तो राइट मोस्ट डेरिवेशन ही है, बट इट इज इन रिवर्स ऑर्डर। तो अपना टेक्नोलॉजी क्या है, बॉटम अप पार्सर्स यूजेस राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर, दिस इज द टेक्नोलॉजी हियर। तो व्हाट एवर द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इज, ऐसा बोल सकते हैं बॉटम अप पार्सर्स आर यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। सो दिस इज द वे, राइट, ओके। देन विल मूव ऑन टू एलआर पार्सिंग। सो ये बॉटम अप पार्सर्स, ऑल बॉटम अप पार्सर्स। सो पार्सिंग में अपन को टू बॉटम अप पार्सर्स में क्या क्या पार्सिंग एल्गोरिथम्स है कल देखे थे अपन। सो दिस इज एलआर पार्सर वन थिंग, एंड देन एलआर पार्सर एक हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑल दिस बॉटम अप पार्सर्स, ये बॉटम अप पार्सर्स जितना है, ऑल दिस बॉटम अप पार्सर्स पूरा अपन बोलते हैं शिफ्ट रेड्यूस पार्सर्स। सी हियर, कल क्लास में अपन जो देखे थे हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म, हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है अपने पास वो कैसा वर्क हो रहा है, ओके। अब ये अपन प्रैक्टिकली इसको एक प्रोग्राम बना के, प्रोग्राम में इसका नाम कंपाइलर टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी और पार्सिंग टेक्नोलॉजी में बॉटम अप पार्सर बोलते, बॉटम अप अप्रोच, बट कंपाइलर टेक्नोलॉजी इसी को बोलते शिफ्ट रेड्यूस पार्सर्स, क्योंकि उसका इंटरनल इनसाइड पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, पुश पॉप ऑपरेशंस होते जाएगा। सो कभी पुश डाउन ऑटोमेटा पुश पॉप ऑपरेशंस, यहाँ पे अपन पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन नहीं बोलते, वो थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन में पुश डाउन ऑटोमेटा का पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन बोल सकते हैं, बट यहाँ पे पार्सिंग में कंपाइलर में इसी को एग्जैक्टली पुश नहीं है, यहाँ पे और कुछ भी इंक्लूडेड है ना, दैट्स वाई इसी को बोलते हैं शिफ्ट एक्शंस, जो स्टैक से हैंडल डिटेक्शन जो करेगा ना, शिफ्ट एक्शंस रेड्यूस एक्शंस। सो पार्सर जो है पार्सिंग करेगा स्टैक यूज करके, पुश डाउन ऑटोमेटा स्ट्रक्चर यूज करके, तो उसमें पुश ऑपरेशंस, पॉप ऑपरेशंस, हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म, ये पूरा इंटरनली जो हो रहा है उसी को बोलते हैं दिस एक्शन, शिफ्ट एक्शंस रेड्यूस एक्शन। एलआर पार्सर में भी ऐसे ही होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में भी ऐसे होगा। तो एक्चुअली अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एलआर पार्सर। टॉप डाउन में अपन को इंपॉर्टेंट है एलएल, वो तो कंप्लीट कर लिए, द सेम वे एलआर पार्सर। तो कल क्लास में अपन एलआर पार्सर का डायग्राम देखे थे, एलआर पार्सर कैसा चलेगा। सो दिस इज एलआर पार्सर। टोकन्स यहां पे लेते हैं अपन, इनपुट बफर, टोकन्स पूरा इनपुट बफर में स्टोर कर लेंगे। विल टेक ए स्टैक हियर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? पर्पस ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज टू परफॉर्म डिटेक्शन ऑफ हैंडल्स। यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट इज हैंडल डिटेक्शन। कल अपन मैनुअली जो किए थे वो अभी एक प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम का नाम है एलआर पार्सर, और अपन इसी को बोलते शिफ्ट रेड्यूस पार्सर। we'll say one more name for this is shift reduce parser. शिफ्ट रेड्यूस पार्सर, ठीक है। ये शिफ्ट रेड्यूस पार्सर क्या होगा? शिफ्ट रेड्यूस पार्सर इज ए बॉटम अप पार्सर, एलआर पार्सर मान लो, एलआर पार्सर में और टोकन्स जो है स्टैक में शिफ्ट कर देते, दैट इज पुश कर देते, उसी को बोलते शिफ्ट एक्शन। कभी हैंडल डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे हैंडल इज डिटेक्टेड, विल परफॉर्म रेड्यूस, शिफ्ट रेड्यूस, शिफ्ट रेड्यूस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स शिफ्ट रेड्यूस, ओके। ऐसा अगर आपको इनपुट सिंटैक्टिकली, ये सिंटैक्स एनालिसिस है ना, सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो पार्स ट्री आउटपुट आएगा, पार्स ट्री आउटपुट आएगा, और इसमें प्रॉब्लम है तो सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, ओके। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। आप प्रैक्टिकल कंपाइलर, सी कंपाइलर, सी प्लस प्लस, जावा कंपाइलर्स कोड ओपन करके देखो, यही स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली रहेगा वहां पे। ये जो है इसी को प्रोग्राम बनाए तो वो है अपना प्रैक्टिकल कंपाइलर, पार्सर। जो पार्सर है कंपाइलर में वो सेम स्ट्रक्चर, वो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाइलर्स जो है आजकल अपन यूज कर रहे,
वो पूरा इसी को प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखते हैं। तो सेम जो है अपन यहाँ पढ़ रहे इसी को आपको कोड में दिखेगा, ठीक है। नाउ हियर वन प्रॉब्लम इज, वन चैलेंज इज देयर। द प्रॉब्लम और चैलेंज हियर इज, ये शिफ्ट कब करना है, रिड्यूस कब करना है। हैंडल है तो हैंडल डिटेक्शन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हियर। टॉप डाउन पार्सर में मोस्ट चैलेंजिंग क्या है, मोस्ट डिफिकल्टी क्या है। अगर एक टॉप डाउन पार्सर में, कल देखे थे ना, टॉप डाउन पार्सर में डिफिकल्टी क्या है, किसी प्रोडक्शन में किसी नॉन टर्मिनल के लिए मल्टीपल प्रोडक्शन है, किसका सेलेक्ट करना है रिप्लेसमेंट के लिए। सो इफ ए नॉन टर्मिनल हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शंस, नॉन टर्मिनल को मल्टीपल प्रोडक्शन है तो कौन सा वो नॉन टर्मिनल्स को कौन सा प्रोडक्शन यूज करके रिप्लेसमेंट करना है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, चैलेंजिंग थिंग फॉर टॉप डाउन पार्सर। बॉटम अप पार्सर में चैलेंज क्या है, शिफ्ट कब करना, रिड्यूस कब करना। अपन कल क्लास में भी देखे थे, रिड्यूस पॉसिबिलिटी शिफ्ट पॉसिबिलिटी दोनों आ रहा है, देन व्हेन टू परफॉर्म शिफ्ट एक्शन, व्हेन टू परफॉर्म रिड्यूस एक्शन। मैं आपको ये और एक बार दिखाऊंगा, कल क्लास में देखे थे। सी हियर, लुक एट दिस स्टेप। सो ये जो है ये हैंडल हो गया, रिड्यूस कर सकते, हैंडल हो गया रिड्यूस कर सकते, बट एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सो लाइक दिस मल्टीपल सिचुएशंस आए तो यहाँ पे रिड्यूस का भी सिचुएशन है, ये रिड्यूस का भी शिफ्ट सिचुएशन है, शिफ्ट का भी सिचुएशन है। तो कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा, वो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट टू द बॉटम अप पार्सर, एलआर पार्सर और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या है, कब शिफ्ट करना, कब रिड्यूस करना। कभी सिचुएशन आ रहा है, अभी शिफ्ट एक्शन होगा, रिड्यूस एक्शन, दिस डिसीजन इज अ वेरी क्रूशियल वन। तो ये डिसीजन प्रॉपरली बनाने के लिए एलआर पार्सर्स जो है, ऑल शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स यूजिंग सम मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म इज नथिंग बट टेबल। एक टेबल यूज कर लेगा इसके लिए, दिस टेबल इज कॉल्ड एज एलआर पार्सिंग टेबल। तो टॉप डाउन में भी अपन LL1 में टेबल यूज कर रहे। सो पार्सर्स नॉर्मली क्या होगा, कंफ्यूजन में जाने का चांसेस है। अगर पार्सर कंफ्यूजन में चले गया तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई कभी पार्सर को कंफ्यूजन में जाने नहीं देना। अपन बना रहे डिटर्मिनिस्टिक थिंग्स, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट्स यूज करके बना रहे। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्लैरिटी होना चाहिए। दैट्स व्हाई अगर आप क्लैरिटी होना चाहिए तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, शिफ्ट रेड्यूस में कंफ्यूजन होने का चांसेस है। वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पार्सर्स है ना, टेबल्स यूज कर लेगा। टॉप डाउन में है तो LL1 टेबल बोलते, यहाँ पे अपन बोलते इसको LR पार्सिंग टेबल, LR पार्सिंग टेबल। दैट्स व्हाई अगर आप ये टेबल अच्छा से डिजाइन करके, ये टेबल ग्रामर के अकॉर्डिंग बनेगा। कल अपन ग्रामर को टेबल जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी ऐसा टेबल्स है। हाँ वो टेबल्स है ना, इसको अटैच करें तो पार्सर विल रन विदाउट कंफ्यूजन। तो टेबल है तो ही पार्सर कंफ्यूजन में ना जाने से अच्छा से हैंडल होगा। देन दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल हैंडल सो मेनी ग्रामर्स। ऐसा पार्सर जो है कॉम्प्लेक्स तो है, सी हियर अपन क्या बोल रहे, बॉटम अप पार्सर्स मोर पावरफुल। इतना पावर क्यों आ रहा है, तो डिजाइन करने में डिफिकल्टी लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है बट पावर ज्यादा है। अगर आप पार्सर बहुत इजी बन रहा है ना, लेस पावरफुल बनेगा। तो सी लैंग्वेज है, मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहा हूँ, जावा लैंग्वेज है, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। इतना एप्लीकेशन के लिए आपका पार्सर बनाना है तो डिजाइनिंग में कॉम्प्लेक्स होगा, बट बहुत सारे एप्लीकेशन हैंडल करेगा, दैट मीन्स मोर पावरफुल। आप जस्ट सिंपल पार्सर यूज करें, वो ज्यादा एप्लीकेशंस को सूट नहीं हो रहा है, सो इजी बनेगा, लेस पावरफुल। दैट्स व्हाई बॉटम अप पार्सर इज समवट कॉम्प्लेक्स, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स बट मोर पावरफुल। वेयर इज दैट, सो दिस टेबल में, ये टेबल में है, पार्सिंग एल्गोरिथम इजी है टेबल। सो लेट अस गो एंड स्टडी दिस टेबल इन टुडेस क्लास। ये टेबल्स कैसा रहेगा देखो। सो दिस टेबल इज नथिंग बट, दिस इज द टेबल। सो अगर ग्रामर ऐसा है तो मैं ग्रामर का टेबल ऐसा बना दिया, दिस इज द टेबल विच इज रिक्वायर्ड हियर। इसी को बोलते हैं अपन LR पार्सिंग टेबल।
LR parsing table. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ये टेबल अभी हम नो प्रॉब्लम. सो देखिए, अभी अपन ये टेबल कैसा डिजाइन करना है, ये ग्रामर को, अगर कभी ग्रामर ऐसा है तो इस ग्रामर से ये टेबल कैसा डिजाइन करना है. अगर ये टेबल डिजाइन हो गया, अटैच कर दो, LR पार्सर भी रेडी है अपने पास. सो लर्निंग अबाउट दिस टेबल इज द नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट हियर. ओके, ठीक है. तो ये टेबल कैसा डिजाइन करेंगे एक बार देखते हैं. So designing of this table is nothing but, it's very easy concept. Okay, so ये table डिजाइन करने हैं तो अपने पास कुछ एल्गोरिथम है. So this table is nothing but, ये table कुछ नहीं, table बहुत easy है. This is a deterministic finite automaton, एक DFA है. This table is nothing but DFA. That's why ये table में ये जो पूरा है ना, states of DFA, states of DFA. Okay, ये पूरा है ना, this is called as action table and this is called as Goto table. ऐसा टेबल 2 वेराइटीज में रहेगा. सो दिस इज सिंपली ए डीएफए कॉन्सेप्ट यूज करके टेबल डिजाइन करेंगे अपन. राइट. सो टेबल डिजाइनिंग के लिए ग्रामर को ऐसा कन्वर्ट करना है, तो कैसा कन्वर्ट करना है, इसके लिए एल्गोरिथम है. सो लेट अस गो एंड स्टडी दैट एल्गोरिथम नाउ. So actually we have one more here, LR0 parser. ये सिंपल है, बहुत इजी है. नॉर्मली SLR से, so next SLR, next this is CLR, this is LLR. ऐसा 4 मेथड्स है टेबल डिजाइन करने के लिए अपने पास. LR0 parser, SLR parser, CLR parser, LLR parser. Like this we have 4 methods here, 4 methods. तो ये 4 मेथड्स यूज करके है ना पार्सर्स कैसा डिजाइन करते हैं. दिस इज व्हाट आवर टुडेस कॉन्सेप्ट. ठीक है. राइट, फर्स्ट LR0 मेथड से स्टार्ट करेंगे. ऑल मेथड्स सेम, ऑल मेथड्स ऑलमोस्ट सेम. सो पावरफुल, दिस इज लेस पावरफुल, दिस इज मोर पावरफुल. सो ये मोर पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है. ऐसा डिफरेंसेस है. आप पावर इन द सेंस, आप दैट्स व्हाई इजीली बनाना है, लेस पावरफुल वाला लेते, ज्यादा पावरफुल वाला बनाना है ये लेते. पावरफुल है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा. देन दिस टू आर इंटरमीडिएट स्टेजेस. दिस इज समवट बेटर देन दिस, इससे पावर वाइज बेस्ट है. कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा टाइम लगेगा. LALR इज लेस पावरफुल कंपेयर टू CLR. सो ये भी थोड़ा इजी है. लाइक दिस different things. So let us go and study this algorithm. LR0 table construction, LR0 parsers कैसा बनेगा. राइट. सो ये टेबल जो है अभी अपन देखे थे ना, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना जो है, दिस इज आवर एम नाउ. विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल. ओके, सो वॉट एवर ये टेबल, ऐसा टेबल बनाने के लिए ये एल्गोरिथम है. सो आवर टारगेट इज डिजाइन ऑफ द टेबल. वो टेबल कैसा बनेगा, फिक्स्ड एल्गोरिथम, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम. सी हियर, कभी कोई ग्रामर दिए तो whenever a grammar is given, first construct augmented grammar. कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर. ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब क्या है, देखिए ऐसा कभी ग्रामर है अपने पास, whenever you have any grammar like this,
if you have any grammar like this, the first thing is construct augmented grammar. What is augmented grammar? जो starting symbol है, adding a one new production, that's all. Augmented grammar concept is very easy. So adding a new production s dash to s, adding a new production s dash to s for your original grammar. जो आपका grammar है इसको adding a new production s dash to s. So this total structure is called as augmented grammar. तो आप थोड़ा augmented grammar बनाना है तो a new production s dash to s जो है इसको add करना है. Add a new production s dash to s for the total structure is called as augmented grammar now. तो मेन एडवांटेज क्या है ना, पार्सर में एक्सेप्ट एक्शन, जो टेबल जो है ये टेबल में एक्सेप्ट एक्शन लेके आना है तो ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन जो है वो ऐड करना है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स वेरी इजी वन. सो स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर को राइट हैंड साइड लेके आते हुए अपन एक न्यू प्रोडक्शन ऐड करना है. बिकॉज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में क्या है नेचर, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है उसमें स्टार्टिंग सिंबल राइट हैंड साइड में रहने का जरूरी नहीं है. ऑल नॉन टर्मिनल्स राइट हैंड साइड में कंपलसरी होना है, अदरवाइज वो यूजलेस बनेगा. बट दैट प्रोविजन इज नॉट देयर फॉर स्टार्टिंग सिंबल. स्टार्टिंग सिंबल में राइट हैंड साइड पार्ट में नहीं है तो भी चलेगा. ये ग्रामर में देखिए राइट हैंड साइड में ये है, बी है, नॉन टर्मिनल, हर एक नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में रहेगा. स्टार्टिंग सिंबल होने का कंपलसरी नहीं है. दैट्स वाई स्टार्टिंग सिंबल को इंटेंशनली अपन राइट हैंड साइड लेके आना है. So by adding a new production s dash to s, so like this adding a new production s dash to s for your original grammar, this is called as augmented grammar. Clear है ये? Is it clear up to now? तो ये algorithm थोड़ा लेंथी है तो आप धीरे धीरे समझो. मैं कंटिन्यूसली पढ़ाते गए तो फिर आपको समझ में नहीं आया तो नो यूज. Is it clear up to now? ठीक है. Then we have to construct LR0 items DFA. LR0 items DFA. The table जो है, table is nothing but DFA. This table is nothing but one DFA, that's all. Table कुछ नहीं, एक DFA है. वो ट्रांसिशन टेबल में है. अभी अपन डायग्राम फॉर्मेट में बनाएंगे इसको. कन्वर्ट दिस डायग्राम इनटू टेबल. अगर वो DFA बन गया ना, दैट इज ओवर. ओके. सो बट यहाँ पे ये DFA जो है, ये DFA किसके लिए बन रहा है? LR0 items. See here, LR0 items. So what are these LR0 items? ये LR0 items क्या है? So actually अपना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, DFA कैसा बन रहा है यहाँ पे? DFA कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को नहीं बन रहा है, DFA LR0 आइटम्स को बन रहा है. व्हाट इज LR0 आइटम? एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन. मान लो ये अपना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन है. दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन, दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस? LR0 आइटम आप बोलना है. इफ यू वांट टू से दिस इज LR0 आइटम. ये पार्सर है ना, पार्सर प्रोग्राम टेक सम डॉट. किधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एनीवेयर इन द राइट हैंड साइड. दिस डॉट विल गिव सर्टेन गाइडेंस टू द पार्सर. पार्सर के लिए कुछ गाइडेंस देता है. सो ग्रामर प्रोडक्शन में डॉट है राइट हैंड साइड में. दिस इज कॉल्ड एज LR0 आइटम. जस्ट ऐसा है तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन. This is called as LR0 item. So this LR0 items will give particular meanings to the parser. Assume we have this one. This is LR0 item. This LR0 item में dot का left part indicates something, dot का right part indicates something. So dot का left part जो है which is there in the stack. This is not there in the stack. Like this, it will give particular indication to the parser. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हैंडल डिटेक्शन. हैंडल डिटेक्शन करना है तो स्टैक में क्या है वो राइट साइड पे मैच हो रहा है कि नहीं. कल अपन क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे हैं राइट हैंड साइड.
सो ये अपन मैन्युअली ह्यूमन बीइंग कर रहे, ये प्रोग्राम करना है तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर दैट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए अपन कुछ डॉट लेते। सो दिस डॉट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो स्टैक में है मीनिंग देता है, dot right hand side whatever is that not there in the stack, so this particular meanings it will give like this। we'll create some dots को all positions में move करके we'll create some LR0 items, so these are called as LR0 item। so this is one LR0 item here, the same way this is one LR0 item, 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 like this। so these are called as LR0 items। so अपना DFA जो है we have to construct DFA for this LR0 items। okay, ये LR0 items कितना बनाएंगे, how many, so how many LR0 items, total number of LR0 items possible, and how many states of DFA, because वो टेबल में जो है ना, this is our target, this is our target, ये पूरा क्या है, all these are DFA states, states of DFA। तो ये states कैसा बनेगा, based on LR0 items, these LR0 items created by whom, कौन create करेगा, we are not creating, यहाँ पे everything is a program, everything is a systematic program here। so this LR0 item is created by two functions here called as closure function and goto function। closure and goto are two functions, these will create LR0 items। LR0 items कितना हो सकता है, कितना number of states DFA में, this all everything is a program here। तो ये पूरा जो है डिजाइन करने वाला प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो है we have a सब प्रोग्राम्स, closure function, actually two functions है यहाँ पे, closure function, goto function। this closure function and goto function will decide about number of states of the DFA and total number of LR0 items। okay, so let us see a closure function क्या काम करेगा, goto function क्या काम करेगा। closure function very important, लास्ट ईयर गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस गेट पेपर्स में क्लोजर फंक्शन से। तो ये क्लोजर फंक्शन क्या करेगा, लेट अस गो एंड सी। सो अपन ये डीएफए बनाना है तो LR0 आइटम्स जो है उसका डीएफए बनाना है तो क्रूशियल रोल प्लेड बाय दिस क्लोजर फंक्शन एंड गोटो फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज दिस क्लोजर फंक्शन इज डूइंग, सो क्लोजर फंक्शन अगर किसी LR0 आइटम, द क्लोजर फंक्शन टास्क इज लाइक दिस, this is our grammar। तो किसी LR0 आइटम में डॉट फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट, डॉट नेक्स्ट राइट साइड में डॉट नेक्स्ट, इफ नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट देन क्लोजर फंक्शन विल एक्ट। किसी LR0 आइटम में इन एनी, दिस इज वन LR0 आइटम, LR0 आइटम, इसमें डॉट नेक्स्ट नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट देन क्लोजर फंक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग इट्स ड्यूटी। तो क्लोजर फंक्शन क्या करेगा, इट विल ऐड दैट नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन, डॉट नेक्स्ट राइट साइड कभी नॉन टर्मिनल है तो क्लोजर फंक्शन विल ऐड दैट नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन, विल ऐड, दिस इज द टास्क ऑफ द क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन का टास्क यही है। तो किसी LR0 आइटम में डॉट का नेक्स्ट नॉन टर्मिनल है तो द डॉट का नेक्स्ट राइट साइड नेक्स्ट नॉन टर्मिनल है तो दैट नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन will be added by closure function and then it will convert into LR0 item। इसको ऐड करके है ना, इसको LR0 item जैसा कन्वर्ट करेगा by putting the dot in the leftmost side first position। so this is the task of the closure function। कभी किधर भी आप closure function ऐड करें तो like this। so in the same way assume I have some LR0 item like this for the same grammar।
Now tell me how many productions added by this closure function. अगर ऐसा है ये ग्रामर यूज करके, अब मैं क्लोजर फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं इसमें, अगर क्लोजर फंक्शन अप्लाई कर दिया आप, हाउ मेनी प्रोडक्शंस इट विल ऐड. तो हाउ दिस क्लोजर फंक्शन जनरली एक्ट्स, क्लोजर फंक्शन एक्ट कैसा करेगा, दैट वी शुड नो. एनी आइडिया? वेरी गुड. क्लोजर फंक्शन क्या करेगा, डॉट का नेक्स्ट एस है, सो इट विल ऐड एस प्रोडक्शन and place the dot here. क्लोजर फंक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये स्टेट्स में until that closure possibility not there. तो डॉट के अगेन क्लोजर पॉसिबिलिटी है ना, डॉट का नेक्स्ट कैपिटल ये है, इट विल ऐड कैपिटल ये प्रोडक्शन, places the dot, so it is adding two productions. Okay, adding two production. देखिए बी प्रोडक्शन ऐड नहीं करेगा यहाँ पे, डॉट का इमीडिएटली नेक्स्ट बी प्रोडक्शन नहीं है, दैट्स वाई एस प्रोडक्शन, डॉट का नेक्स्ट एस है, एस प्रोडक्शन ऐड होगा, डॉट का नेक्स्ट ये है, ए प्रोडक्शन ऐड होगा. दिस इज द क्लोजर फंक्शन. ओके, assume my grammar production is like this. ये मेरा ग्रामर है, grammar productions, and I have some LR0 item like this. अगर मैं क्लोजर फंक्शन अप्लाई करता हूं, then how many productions it will add, tell me. If I apply closure function, how many productions it will add? How many productions? Very good. So after dot s है, after dot के next dot का next s है, तो s production will be added, place the dot, and dot का next immediately ये नहीं आ रहा है, so a production will not be added here, a production add नहीं होगा. ठीक है, very good. तो in the same way, assume I have this production, grammar production, राइट. अभी क्लोजर, इसमें क्लोजर अप्लाई करें तो कितना प्रोडक्शन से ऐड होगा, इफ आई अप्लाई क्लोजर ऑन दिस, इसमें मैं क्लोजर अप्लाई करता हूं, कितना प्रोडक्शन से ऐड होगा. So how many productions? Please all of you try. तो ट्राई कर दीजिए. द क्लोजर फंक्शन इज द मेन थिंग. अगर क्लोजर अच्छा से समझ में आ गया ना, देन एवरीथिंग इज इजी हियर.
See here dot next e है, it will add e productions and place dot here. डॉट नेक्स्ट टी है, एड टी प्रोडक्शन प्लेस हियर. तो कितना प्रोडक्शन से ऐड हो रहा है? 3 प्रोडक्शंस. ओके, वेरी गुड लाइक दिस. तो क्लोजर फंक्शन ऐसा एक्ट होगा, ठीक है. एंड वी हैव वन मोर थिंग इन दिस go to. A DFA बनाना है तो we want the help of one more thing called as go to function. Go to function. Okay. So what is a go to function here? Go to function. Go to function यहाँ पे it is doing particular thing. I can take this as small go to, small g. Go to. Okay. What is task of go to function? Go to function it's very easy. तो किसी LR0 आइटम में ऐसा LR0 आइटम है, अगर आप go to अप्लाई कर दिए इसमें, go to क्या करेगा? It will move dot one position ahead towards right side. डॉट को है ना, डॉट को राइट साइड में वन पोजीशन मूव कर देगा. दैट इज अ गो टू टास्क. तो टास्क ऑफ गो टू क्या है? डॉट विल बी मूव्ड वन पोजीशन टुवर्ड्स राइट साइड. यहाँ पे डॉट है ना, इसको यहाँ पे मूव कर देगा. दिस इज आवर गो टू हियर. तो इसमें गो टू अप्लाई कर दिए, इसमें गो टू अप्लाई कर दिए, डॉट यहाँ पे मूव हो जाएगा. Is it clear? So if we have like this, कोई भी LR0 आइटम ऐसा है, डॉट विल बी मूव्ड. दिस इज अ गो टू. सेम वे अगर आपके पास ऐसा है LR0 आइटम, इफ अप्लाई लाइक दिस, गो टू ऑन दिस, अगर इसमें गो टू अप्लाई कर दिए, गो टू अप्लाई कर दी, देन इट विल मूव लाइक दिस. डॉट डॉट को राइट साइड मूव कर देगा, वन पोजीशन राइट साइड मूव कर देगा, बस. दिस इज गो टू. गो टू इज वेरी इजी. क्लोजर थोड़ा अच्छा से. ओके, सो इफ यू नो क्लोजर एंड गो टू, क्लोजर एंड गो टू, देन क्लोजर एंड गो टू यूज करके अपन डीएफए बनाते. ये डीएफए को आप टेबल जैसा कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट दिस डीएफए इनटू टेबल. ओके, दैट इज. सो नाउ लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ this parsing table through some example. So construct LR0 parsing table for the following grammar. I am giving one grammar as same example we'll take here. Construct LR0 parsing table for this. So first step क्या है? See here algorithm. algorithm में अपन को फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर. व्हाट इज ऑगमेंटेड ग्रामर? एडिंग ए न्यू प्रोडक्शन. ठीक है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड ग्रामर. एडिंग ए न्यू प्रोडक्शन s dash gives s. दिस टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड ग्रामर. ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट LR0 आइटम्स DFA. सेकंड स्टेप, see the second step here. Construct LR0 items DFA using closure and go to. Augmented का first step very easy है. LR0 items DFA कैसा construct करेंगे? How this LR0 items DFA will be constructed? So just by using closure and go to. So in the same example, I am going to construct LR0 items DFA. Take the augmented production and place the dot here. Augmented productions may just place. That is the first thing we have to do. So we'll do this much. Then closure and go to function apply करना है. Now this is the grammar. तो augmented जो है, added production जो है, just convert that into LR0 item. That is the first step. Then closure and go to will take care. What is the closure and go to here? Now closure, first closure apply करो इसमें. If I apply closure, what happens? Dot के बाद s है.
S production will be added and converted into LR0 item. क्लोजर अप्लाई कर रहा हूँ, क्लोजर अप्लाई करें तो ऐसा हो गया. देन डॉट के नेक्स्ट ये है, ए प्रोडक्शन आल्सो विल बी एडेड एंड बी प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा. दिस इज अवर I0 स्टेट फर्स्ट स्टेट ऑफ द DFA, फर्स्ट स्टेट ऑफ द DFA. ओके, सो क्लोजर हो गया. अप्लाई गोटू ऑन एवरी आइटम में, एवरी LR0 आइटम में गोटू अप्लाई करना है. अप्लाई ऑन दिस. गोटू अप्लाई करें तो क्या हो रहा है? दिस इज गोटू, आई एम अप्लाइंग गोटू ऑन दिस. देन गोटू अप्लाइंग गोटू रिजल्ट्स लाइक दिस. So you can take this state name as I1 state, I2 state, I3 state, I0 state, I1 state on S. डॉट का नेक्स्ट ऑन S गो टू. ये पूरा गो टू है. ट्रांसिशंस जो है ना DFA ट्रांसिशंस, ऑल दिस ट्रांसिशंस आर गो टू. सो इसका गो टू में ये आ रहा है, इसका गो टू में ये आ रहा है, इसका गो टू में. सो I0 स्टेट में क्लोजर अप्लाई कर दिए, गो टू अप्लाई कर दिए. परफेक्ट. लाइक दिस हर एक स्टेट में जाके है ना, हर एक स्टेट में. सो ये स्टेट्स में जो आइटम्स है ना, सेट ऑफ, इसको सेट ऑफ LR0 आइटम्स भी बोलते, स्टेट ऑफ द DFA बोलते, एनीथिंग यू कैन से. सो एक स्टेट में क्या होगा? सेट ऑफ LR0 आइटम्स रहेगा. ओके, लाइक दिस क्लोजर एंड गो टू कंटिन्यूसली अप्लाई करें तो कितना स्टेट्स आ रहा है? दोज मेनी स्टेट्स आर देयर इन आवर DFA, उतना ही स्टेट्स अपन को टेबल में भी रहेगा. ठीक है, राइट. नाउ I1 में जाओ, क्लोजर अप्लाई करो, गो टू अप्लाई करो. इन I1 नो क्लोजर नो गो टू. क्लोजर का पॉसिबिलिटी नहीं है, गो टू का पॉसिबिलिटी नहीं है. कम टू I2 स्टेट. I1 इज परफेक्ट नाउ. I2 स्टेट, I2 स्टेट में एनी क्लोजर पॉसिबिलिटी इज देयर आर नॉट? टेल मी. I2 स्टेट में क्लोजर का पॉसिबिलिटी आएगा कि नहीं? प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई फ्रॉम योर साइड. Which production added? डॉट बी प्रोडक्शन. डॉट का नेक्स्ट बी है, बी प्रोडक्शन एडेड. दिस इज अवर I2 I3. हाँ, देन क्लोजर अप्लाई कर दिए ना, गो टू अप्लाई करो ऑन दिस. गो टू अप्लाई कर दिए तो इट इज मूविंग हियर ऑन दिस. गो टू अप्लाई कर दो. So that's all. This is our LR0 items DFA. Total I0 to I5. So I2 में क्लोजर अप्लाई कर दिए, गो टू अप्लाई कर दिए. कम टू I3 स्टेट, नो क्लोजर नो गो टू. I4 स्टेट क्लोजर नहीं है, हर एक स्टेट में देखना है क्लोजर गो टू. नो क्लोजर नो गो टू. I5 स्टेट नो क्लोजर नो. दैट्स ऑल. So if you convert this into this is our parsing table. अभी क्या करना है? This is DFA, no? This DFA if you convert into like this, so the same state see here, I0 to I5. These are the states of the same grammar, same example. सेम एग्जाम्पल के लिए तो ये इजी है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना इजी है. टेबल इज नॉट द मेन थिंग. अपना जो DFA है ना, वो अपना मेन थिंग है.
तो वो DFA कैसा कंस्ट्रक्ट करता है देखो. नाउ लेट अस सी कन्वर्शन ऑफ दिस इनटू टेबल. सी हियर टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे फर्स्ट. दिस इज आवर पार्सिंग टेबल. ये DFA बन गया. DFA is very easy, just to closure and go to. Now we have to convert this into like this table. This is our parsing table, LR parsing table. Right. So here, see, I0 statement, the transitions. So first table structure देखो. All the states arrange as rows. States of the DFA, I0 to I5. Okay. And ये table जो है, it is converted into two parts. One part is called as action table and the other part is called as Goto table. इसको बोलते हैं अपन एक्शन टेबल. इसको बोलते हैं गोटो टेबल. व्हाई इट इज एक्शन टेबल मींस यहाँ पे पूरा एक्शंस, ये शिफ्ट एक्शंस देखिए कितना एक्शंस पॉसिबल है वो पूरा यहाँ पे रहेगा. शिफ्ट एक्शन, रिड्यूस एक्शन, एक्सेप्ट एक्शन, ऑल द ब्लैंक एंट्रीज आर एरर. यहाँ पे ब्लैंक जो है ये पूरा एरर एक्शंस का इंडिकेशन देता है. ऑल दिस ब्लैंक आर एरर हियर. ओके. एक्शन टेबल में एक्शंस ऑफ, बिकॉज अपन LR पार्सर को गाइडेंस देना है ना. व्हाई दिस टेबल, we have to attach this table to our LR parser, previous parser. ऐसा टेबल बन गया तो इसको अपन जो प्रीवियसली LR parser जो देखे थे, दिस इज आवर टेबल, यहाँ पे अटैच करना है. ये पार्सर को मेन वाई वी आर कमिंग हियर, शिफ्ट एक्शन रिड्यूस एक्शन का इंफॉर्मेशन देख, मेनली शिफ्ट एक्शन रिड्यूस एक्शंस, एक्सेप्ट एरर भी रहेगा. अगर एरर ब्लैंक एंट्री आ रहा है सिंटैक्स एरर, एक्सेप्ट आ रहा है पार्स ट्री. सो मेन एक्शंस आर शिफ्ट एंड रिड्यूस. तो एक्सेप्ट एंड एरर भी एडिशनल. एक्सेप्ट आ गया पार्स ट्री प्रोड्यूस करेगा, एरर आ रहा है सिंटैक्स एरर आउटपुट्स. सो ऐसा टेबल बना रहे अभी अपन. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल नाउ, सी हियर. राइट. सो एक्शन टेबल में terminals plus dollar, all the terminals plus dollar as columns. terminals और LL1 टेबल स्ट्रक्चर भी देखे थे. तो terminals plus dollar, यहाँ पे भी एक्शन टेबल में terminals plus dollar as columns. rows जो है states of the DFA and all the non terminals in the Goto table. Goto table में कुछ नहीं, कुछ एक्शंस नहीं रहेगा, सिंपली स्टेट्स ऑफ द DFA. DFA का स्टेट्स है, बेस्ड ऑन सम इट विल बी अरेंज्ड. नाउ ये एंट्रीज कैसा देना है देखो. सी हियर, बेस्ड ऑन ट्रांसिशंस. यहां तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर अप टू नो? इज इट क्लियर टिल नो? अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है थोड़ा अच्छा से देखो. I am converting this into like this. Okay, first point here is LR0 आइटम्स DFA में हर एक स्टेट्स का ट्रांसिशन लेते. सो स्टेट 0 having three transitions. So as per these transitions entries fill करना है. इसमें ट्रांसिशंस लेबल्ड विथ टर्मिनल, ट्रांसिशंस ऑफ टर्मिनल जो है, दिस विल गिव अस शिफ्ट एक्शंस. ट्रांसिशंस ऑफ नॉन टर्मिनल जो है, दिस विल गिव अस reduce actions. Okay, right. So see here, I0 state
टर्मिनल ट्रांसिशन है, ये शिफ्ट एक्शन देता है अपन को। सो I0 स्टेट ऑन ये शिफ्ट एक्शन, टर्मिनल ट्रांसिशन शिफ्ट एक्शन, शिफ्ट एक्शन। दैट्स व्हाई टेबल में देखो कैसा दे रहा हूं, टेबल में एंट्री I0 स्टेट ऑन ये शिफ्ट एक्शन। एवरी शिफ्ट एक्शन एसोसिएटेड विथ नंबर रहेगा, दैट नंबर इज नथिंग बट अपना गोइंग स्टेट नंबर। सो I0 स्टेट ऑन ये शिफ्ट एक्शन गोइंग स्टेट 3। सो I0 स्टेट, I0 स्टेट इसका एंट्री, दिस इज शिफ्ट एक्शन। I0 स्टेट शिफ्ट एक्शन on ये going state 3, that's why table entry I0 state on ये shift action and go to 3. Right, in the same way these two transitions on I0 state on capital S going to one state, non terminal जो है go to table entry में, so on capital S going to state 1, on capital A going to state 2. Go to table में just state numbers बस, no actions, action tables are only in the this one. Okay, so like this हर एक स्टेट में जाके है ना, हर एक स्टेट में as per the transitions, transition कैसा है उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्रीज देना है। so this 3 entries clear, right? then देखिए ट्रांसिशंस कहाँ पे है, I1 में कोई ट्रांसिशंस नहीं, but I2 स्टेट हैविंग ट्रांसिशंस। so as per this transitions ये होगा शिफ्ट एक्शन, ये होगा गो टू टेबल एंट्रीज। so I0 स्टेट I2 स्टेट on capital B, I2 state on capital B 4, capital B go to table entries 4, and same way I2 state on small b, I2 state on small b shift action and fifth state. so I2 state on small b shift action and fifth state. so shift actions go to table entries are over. Clear till now? then remaining reduce actions. what is कब reduce action देते, किसी LR0 आइटम में, किसी LR0 आइटम में डॉट एट राइट मोस्ट एंड, डॉट एट राइट मोस्ट एंड। सो LR0 आइटम में डॉट राइट मोस्ट एंड, तो वहां पे रिड्यूस देना है। यहाँ पे कौन सा स्टेट में रिड्यूस का पॉसिबिलिटी है, प्लीज आंसर दिस। कौन सा स्टेट में अपन को रिड्यूस का पॉसिबिलिटी आ सकता है, डॉट एट राइट मोस्ट एंड। सो डॉट एट राइट मोस्ट एंड यहाँ पे है LR0 आइटम डॉट लास्ट में, ये रेड्यूस, दिस विल गिव रेड्यूस। टेबल में अपन को ये रेड्यूस देगा, LR0 आइटम डॉट लास्ट में है, दिस आल्सो विल गिव रेड्यूस। LR0 आइटम डॉट राइट मोस्ट एंड है, दिस आल्सो विल गिव रेड्यूस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 4 3 4 5 3 4 5 ओके। 1 में भी है दिस, ये जो है ना दिस विल गिव एक्सेप्ट। एक्चुअली ये लेने का द मेन इंटेंशन ऑफ दिस इज रेड्यूस। कभी बोलना है तो ओरिजिनल ग्रामर प्रोडक्शन है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रेड्यूस, बट इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, दिस इज एक्सेप्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जो है दैट ऑलवेज गिव अस एक्सेप्ट एक्शन, ठीक है। सो टेबल में सी हियर इन द टेबल रेड्यूस है, द रेड्यूस इज एसोसिएटेड विथ सम नंबर्स। कभी अपन रेड्यूस बोल रहे हैं ना, वो रेड्यूस के नंबर्स है। व्हाट आर दिस नंबर्स? रेड्यूस का नंबर्स जो है, दिस नंबर्स आर नथिंग बट आवर ग्रामर नंबर्स, एक्चुअल ग्रामर नंबर्स। सो ग्रामर में 3 प्रोडक्शंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो I3 स्टेट में, सो दिस इज 1 2 3, I3 स्टेट में रेड्यूस हो रहा है। I3 स्टेट में रेड्यूस, प्रोडक्शन नंबर कौन सा नंबर है ये, this is second production, so we have to show R2 here, we have to show R2, okay, that's why table में I3 state में R2. So, but question is why it is only in this place, I3 state में R2 कौन सा प्लेस में, यहाँ पे। for this different techniques है, यहाँ पे वेरी करेगा आपका
SLR, LR0, LALR, CLR, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे है. वे ऑफ प्लेसिंग रिड्यूस एक्शंस जो है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव 4 मेथड्स. 4 मेथड्स. ओके, सो मैं किसी एक मेथड देख LR0 SLR बताता हूँ यहाँ पे. अपने पास टाइम कम है ना, तो LR0 SLR आप है ना CLR LALR का देख लो, जस्ट रेड्यूस का डिफरेंस है. ठीक है, तो I3 स्टेट में R2 देना है. अगर LR0 है तो R2 इन ऑल प्लेसेस. अगर ये LR0 मेथड होता है, LR0 पार्सर पार्सिंग टेबल होता है, R2 इन ऑल प्लेसेस. अगर ये SLR1 होता है ना, सो वी हैव दिस वन. तो लेफ्ट हैंड साइड फॉलो वैल्यू ले लो. लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल, दैट इज फॉलो ऑफ ए. फ्रॉम द गिवन ग्रामर कैन यू टेल मी व्हाट इज फॉलो ऑफ ए? गिवन ग्रामर से फॉलो ऑफ ए वैल्यू क्या है? From the given grammar, what is the follow of ये? तो फर्स्ट फॉलो इन्फॉर्मेशन पार्सर, बॉटम अप पार्सर में भी जरूरी है. जो फर्स्ट फॉलो इन्फॉर्मेशन है ना बॉटम अप पार्सर के लिए, हर एक पार्सर के लिए फर्स्ट फॉलो इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट फॉलो इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी हियर. सो फॉलो ऑफ ये इज नथिंग बट, तो कभी आप फिल करना है ना लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल का फॉलो बी. दैट्स वाई ये स्टेट में वी हैव टू गिव R2 ओनली इन बी प्लेस. ओनली इन बी प्लेस. सो दिस पार्सर इज बेस्ट. अच्छा है. So not powerful like CLR, इतना powerful नहीं है, but it's good, somewhat better, right? In the same way, I4 state में we have reduce. Which production? First production. So I4 state में अपन R1 show करना है, R1 place करना है. So I4 state में we have to place R1. R1. Which place? Which place? So that is decided based on left hand side follow of S. So can you tell me what is follow of S from given grammar? Follow of S क्या है? What is follow of S from given grammar? Follow of S is simply dollar. So only in dollar place R1. I4 state में R1 only in dollar place. So capital R1, small r1, okay, right. The same way I5 state में we have reduce production number R3. I5 state में production number R3. So I5 state में we have to give R3. Production number is B2 B dot. So follow of B लेना है. Can you tell me what is follow of B from given grammar? Follow of B क्या है? What is follow of capital B from given grammar? From the given grammar, what is follow of capital B? Yes, that's why here it is dollar. तो I5 state में R3 show करना है. So follow of B dollar only in dollar place. That's all. This is our parsing table. Clear? Is it clear? So this method is जो अपन जो method use करें SLR1 method है. So this parsing table is called as SLR1 parsing table. Clear? So this ये parsing table जो है अटैच करो LR पार्सर को. पार्सर विल परफॉर्म शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग. देखिए पार्सर कभी आके पूछे तो शिफ्ट एक्शन, अभी कौन सा एक्शन, ये स्टेट में, स्टेट्स पूरा स्टैक में रहेगा, ये पूरा इनपुट बफर में रहेगा. तो पार्सर कभी कंफ्यूज हो रहा है, अटैच दिस टू LR पार्सर. This is our LR parser. So whenever it is coming and asking,
अगर ये शिफ्ट एक्शन बोल रहा है तो पार्सर विल परफॉर्म शिफ्ट एक्शन, ये reduce एक्शन बोल रहा है, parser will perform reduce action. Like this, based on the guidance of this table, LR parsing वर्क होते जाएगा. सेम LL पार्सर भी, यहाँ पे पार्सर जो है टेबल्स के गाइडेंस के ऊपर चलते रहेगा. दैट्स व्हाई दिस टेबल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड वी हैव ग्रामर डिटेक्शंस. कभी कभी है ना मल्टीपल एक्शंस इन द सेम सेल, एक सेल में शिफ्ट रेड्यूस दोनों एक ही जगह में. शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. Shift reduce conflict. Sometimes multiple reduce in the same box, and this is called as reduce conflict. तो किसी ग्रामर का टेबल बनाए तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दैट ग्रामर इज, अगर ये एसएलआर टेबल बनाए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दिस इज नॉट SLR1 ग्रामर. LR0 टेबल बनाए ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, नॉट LR0 टेबल. CLR1 टेबल बनाए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, नॉट CLR1 टेबल, अदरवाइज CLR1. लाइक दिस ग्रामर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन टेबल ओनली. ओके. सो यहाँ पे ये ग्रामर का टेबल बनाए अपन, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहा है, तो दिस इज SLR1 ग्रामर और नॉट? दिस ग्रामर कम्स अंडर SLR1 or not? Tell me. This grammar comes under SLR1 grammar or not? इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, अभी अपन बनाए. दैट्स व्हाई these grammars are called as SLR1 grammar. Okay. So this is the way of construction of the table. Just attach this table to our LR parser. Then LR parser ये table use करके है ना parsing करके, that is parse. Here main thing is, the most important thing here is, so designing of this table. So that's all about table construction. Is it clear? So bottom up parser use करके, most important is LR parser. Any doubt in the table? So main important concept, gate point of view. Questions कहाँ पे आएगा? So gate point of view will get questions from this table construction only. So table construction LL parser में भी same है. So table construction कैसा करते, वो table construction के ऊपर ही अपन को questions. Right. With this ये concept जो है bottom up parser जो है, will stop here. LR parser. Next we'll move on to our ये parsing. अगर bottom up parser top down parser समझ में आ गए ना, then we'll move on to our next concept, that is SDT, syntax directed translation. Now let us focus on, तो parser बन गया ना by using any of the parser, top down parser, LL, bottom up parser. Then we'll move on to syntax directed translation concept. So what is this syntax directed translation? See here, syntax directed translation is nothing but this one. Here we have mainly two things. इन चार्ट फॉर्म में SDT बोलता हूँ, SDT. सो अपना पार्सिंग के बाद जो एज पर द गेट सिलेबस, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज SDT, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. ओके, सभी को पार्सिंग क्लियर है? ये भी पार्सिंग के ऊपर ही चलता है, एज पर द पार्सिंग. इज इट क्लियर?
Parsing clear for everybody? Right. What is syntax directed translation? In short form, we'll call it as SDT. SDT or syntax directed क्या हो गए? Context free grammars, context free grammar productions जो है, context free grammar productions associated with semantic rules. Context free grammar productions are associated with set of semantic rules. Semantic rules. तो ये CFG plus rule, ये structure जो है CFG plus rule, this total structure is called as the syntax directed translation here. See here, यहाँ पे context free grammar production है, इसके लिए associated कुछ rule है. This is semantic rule. Here we have a context free grammar production. इसका associated कुछ rule है. This is called as a semantic rule. Here we have a context free grammar production associated with set. कुछ कभी रूल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, चलेगा. सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोडक्शन है, इसके एसोसिएटेड रूल है. We have a context free grammar production and we have an associated rule here. So this total structure CFG plus rule, like this, grammar production associated with set of semantic rules. This total structure is called as syntax directed translation. Normally, what is the use of this? Syntax analysis phase जो है, syntax analysis program. So syntax analysis program, what it will do? Syntax errors check करेगा. उसमें क्या क्या concepts use हो रहा है? Context free grammars, parsing algorithms, LR parser, LL parser, LL1 parser, कोई भी. So parsing algorithms जो है syntax error detect करेगा. But parser, problem with parser syntax analyzer is it is having one drawback. वो syntax errors तक check कर सकता है, semantic errors of the program cannot check. तो मान लो आपका प्रोग्राम में semantic errors है, so semantic errors check करने के लिए parser को capability नहीं है. Parser don't have the capacity to detect semantic errors. ये semantic errors क्या होता है? Using one variable without declaration. आप कुछ वेरिएबल यूज कर रहा है, उसको डिक्लेयर नहीं करा, पार्सर कैच नहीं कर पाएगा उसको. टाइप इनकम्पैटिबल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन में इंटीजर एंड स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं आप दो, वो पार्सर नहीं चेक कर पाएगा. टाइप चेकिंग बोलते हैं इसको. सो टाइप चेकिंग, ऑल दिस थिंग्स कैनॉट बी डन बाय पार्सर सिंटैक्स एनालाइजर. तो ये टाइप चेकिंग, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये पूरा चेक करना है तो we need additional program that is semantic analysis. ये semantic analysis में कौन सा concepts use करके डिजाइन करते. तो पार्सर सिंटैक्स एनालाइजर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें अपन? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, पार्सिंग एल्गोरिथम्स, LR पार्सिंग, ऐसा पार्सिंग एल्गोरिथम्स, ये कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. लाइक दिस, व्हाट इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सिमेंटिक एनालिसिस फेज? ये फेज ऐसा वर्क करने का बिहाइंड कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? That is syntax directed translation. SDT बोलते हैं, syntax directed translation. What is this syntax directed translation is? तो पूरा यहाँ पे नहीं, तो semantic analysis, intermediate code generation, ये दो coming phases जो है, two programs है, ये दोनों programs SDT is the behind concept, background concept. ये semantic analyzer, intermediate code generate करने के लिए अपना background concept जो है syntax directed translation. दैट्स वाई गेट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन देना है, अच्छा क्वेश्चन दे रहा है 2 मार्क्स का, आफ्टर फर्स्ट देखिए गेट में है ना, पार्सिंग इज द फर्स्ट एरिया फ्रॉम वेयर यू विल गेट क्वेश्चन. पार्सिंग से फर्स्ट क्वेश्चन जरूर आएगा. पार्सिंग के नेक्स्ट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज एसडीटी, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. सो अभी अपन सिंटैक्स डायरेक्टेड, ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो व्हाट इज दिस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन? Whatever the context free grammars अपन पार्सिंग में देखे थे, सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग में, फॉर द सेम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स प्रोवाइडिंग सम रूल्स, अटैचिंग सम रूल्स, कुछ रूल्स अटैच कर देते. दिस इज कॉल्ड एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. सो दिस इज वन एसडीटी, ग्रामर हैविंग रूल, ग्रामर हैविंग रूल, एंड वी हैव वन मोर एसडीटी हियर.
So we have a grammar. We have a grammar and associated rule. We have a grammar, associated rule. We have a grammar, associated rule. Like this. This total structure, grammar rule, grammar rule. So this structure is called as SDT. Okay. तो यहाँ पे इसको evaluate कैसा करना है? See here, this SDT is once again carried out with parsers. Parsers use करके अपन करते. We have one question here. एक question solve करने का try करेंगे. See this question. Consider following translation scheme. SDT को अपन translation scheme भी बोलते. This is other name for syntax directed translation. So we have a grammar here and this. So this is total structure is one SDT. 3 grammar production, 1 production, 2nd production, 3rd production. So this total structure is one SDT. ये क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है देखो यहाँ पे. This is 1 year gate question. A shift reduce parser carries out actions of this translation scheme. What output it will print for the input? This one. शिफ्ट रेड्यूस पार्सर बोले तो कौन सा पार्सर होता है? टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर. कभी आप शिफ्ट रेड्यूस पार्सर बोल दिए, ये कौन सा पार्सर होता है? टॉप डाउन और बॉटम अप? Whenever you say shift reduce parser, ये कौन सा पार्सर होगा? टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर? बॉटम अप पार्सर. ओके. सो फर्स्ट सी हियर, एसडीटी से अलग से नहीं है. एसडीटी completely working based on, see all these are interlinked concepts. एसडीटी पार्सर के अकॉर्डिंग ही चलेगा, पार्सर के अकॉर्डिंग चलेगा. तो एसडीटी जो है सिमेंटिक एनालिसिस डिजाइन करने के लिए, इंटरमीडिएट कोड डिजाइन करने के लिए यूज होता है दोनों. दैट्स व्हाई पार्सिंग, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ऑल दीज आर मिक्स्ड अप. अलग अलग नहीं है, ये पूरा मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट्स है. दैट्स व्हाई कंपाइलर में ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा अलग है, एक्सेप्ट दैट ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स. टोकन्स जो है वो भी पार्सिंग में यूज होता है. दैट्स व्हाई आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो अपन क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं. सी हियर व्हाट, ये क्या बोल रहा है? ये शिफ्ट रेड्यूस पार्सर कैरीज आउट. तो फर्स्ट अपन शिफ्ट रेड्यूस पार्सर बॉटम अप पार्सर है ना, तो ये जो दिस इज अ ग्रामर, दिस इज अ इनपुट. तो आप इसका बॉटम अप पार्सिंग करना है by using handle detection. So please do bottom up parsing on this by using this grammar. यहाँ पे grammar, this is a grammar as per given grammar. अलग से लिखते आपको easy लगेगा. Right, input. So all of you do one thing. इसका bottom up parsing perform करके how many handles detected can you please identify? अगर इसमें बॉटम अप पार्सिंग करें तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हैंडल्स डिटेक्टेड बाय बॉटम अप पार्सर? हाउ मेनी टोटल हैंडल्स डिटेक्टेड बाय बॉटम अप पार्सर? फर्स्ट पार्सिंग करो. पार्सिंग इज द मेन थिंग. दैट्स व्हाई अपन पार्सिंग में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं. पार्सिंग नहीं आए तो आपको आगे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आएगा. पार्सिंग इज अ मेन कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे ये भी एसडीटीएस भी सॉल्व करना है आपको, पार्सिंग आना चाहिए. क्वेश्चन देखो, शिफ्ट रेड्यूस पार्सर कैरीज आउट बोल रहा है, तो बॉटम अप पार्सिंग करो. फर्स्ट व्हाई इज द हैंडल, सो हैंडल डिटेक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए. द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट वन. SZ is a handle represented by W. XXW is a handle represented by S. SZ is a handle represented by W. Next, this is the handle represented by S. Okay, like this. So this is bottom up parsing. What will happen is
कभी एसडीटी जो है बॉटम अप पार्सर से कैरीड कर रहा है ना, पार्सर विल डू पार्सिंग, पार्सर विल डू पार्सिंग बेस्ड ऑन ग्रामर प्रोडक्शंस, बट एसडीटी में क्या होगा, ग्रामर प्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड रूल्स भी है। तो व्हेनेवर पार्सर इज डूइंग पार्सिंग फॉर योर इनपुट, इनपुट के लिए पार्सिंग करेगा ना, कभी ये पार्सिंग करने के लिए ग्रामर प्रोडक्शंस का जरूरी है। व्हेनेवर इट इज यूजिंग प्रोडक्शन, इट्स एसोसिएटेड रूल भी एग्जीक्यूट कर देगा, इट्स एसोसिएटेड रूल आल्सो विल बी एग्जीक्यूटेड। सो फर्स्ट तो कौन सा प्रोडक्शन कौन सा सीक्वेंस में यूज हो रहा है, फर्स्ट वाई इज रिप्लेस टू पार्सर, ये प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो इसका रूल क्या है, प्रिंट, ऑल दीज आर प्रिंट स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट टू इज प्रिंटेड, टू इज प्रिंटेड, ओके। सो लाइक दिस, इस सीक्वेंस में प्रोडक्शंस यूज कर रहा है तो कौन सा आउटपुट आ सकता है, कैन यू प्लीज ट्राई वंस, आप एक बार ट्राई करो इसका, अगर ये सीक्वेंस में प्रिंट करना है कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है, कभी प्रोडक्शन यूज हो रहा है ना, उसका एसोसिएटेड रूल प्रिंट होगा। एनी अदर आंसर्स? राइट, सो हियर फर्स्ट ये प्रोडक्शन यूज हो रहा है एस टू वाई, तो टू इज प्रिंटेड, देन एस टू डब्ल्यू, एस टू डब्ल्यू 3, नेक्स्ट XXW to S, 1 is printed, next SZ to W 3, next X 1, so the output here will be 23131, clear? So that's all, parsing SDT कुछ नहीं, SDT is completely based on parsing। तो आप कभी प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं ना, इसका रूल भी एग्जीक्यूट करो, प्रोडक्शन यूज कर रहा है इसका रूल भी एग्जीक्यूट करो, दैट्स व्हाई एसडीटीज पार्सर्स मिलके चलता रहेगा। सो एसडीटीज जो है ये पार्सर से ही चलेगा, तो पार्सर कभी वहां पे सिर्फ ग्रामर प्रोडक्शन, पार्सिंग में अपन सिर्फ ग्रामर प्रोडक्शन से हैंडल करते, यहाँ पे कभी आप ग्रामर प्रोडक्शन टच करें तो इसका रूल भी है, रूल भी एग्जीक्यूट करो। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्सर एंड दिस वन हियर, ओके, इज इट क्लियर? सो ये कौन सा ऑर्डर में प्रोडक्शन रूल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी प्रोडक्शन टच कर दिया इसका रूल, कभी ये सीक्वेंस में प्रोडक्शन को टच कर रहा है ये पार्सर, तो इसका प्रिंटफ स्टेटमेंट्स जो है ऐसा ऑर्डर में आ रहा है, तो द आउटपुट विल बी, आउटपुट इज नथिंग बट 23131, इज इट क्लियर? सो कभी एसडीटीज देते, सो मेनी क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा 2 मार्क्स क्वेश्चन देना है, सो लास्ट ईयर गेट में भी है, देखो एसडीटी देना है, he will give question, he will give some input, what is the output of this, generally these type of questions, okay, right? So this is actually 1 year gate question, so you have solved very easily. See here, this is one more SDT, this is also given in 1 year gate. So the question here is, ये SDT है, grammar its rule, grammar its rule, grammar its rule, so ये क्या पूछ रहा है, e dot value of root compute e dot, इसका अकॉर्डिंग e dot वैल्यू जो है रूट का कंप्यूट करो फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन 2#3 ऐसा है, तो एज पर दिस रूल्स एवेल्यूट करें तो क्या वैल्यू आएगा, कैन यू प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन?
सो फर्स्ट आप क्या कर लेते, पार्स ट्री बनाओ। ये जो इनपुट दे रहा है ना, इनपुट का पार्स ट्री बनाओ। इनपुट का पार्स ट्री बना लो। सो ये देन कौन सा, कभी आप किसी प्रोडक्शन को टच करे तो उसका रूल एग्जीक्यूट करो, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है देखो। सो मैं इसका पार्स ट्री यहीं पे बना रहा हूं। Directly you can take the value. तो यहां तक हो गया ये। Right, this is a parse tree structure. फर्स्ट पार्स ट्री बना लो, इजी होगा। नहीं तो पार्सर के अकॉर्डिंग चलना है तो भी वो भी ठीक है, वो टाइम लगेगा। तो आप पार्स ट्री बना के है ना, कभी कौन सा प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं देख लो। राइट, सो दिस इज अ पार्स ट्री एंड इसमें एट्रीब्यूट अपन को ये वैल्यू चाहिए, रूट वैल्यू। सो वी वांट दिस वैल्यू, ये इसमें डिपेंड हो रहा है ना। फर्स्ट इसको कैलकुलेट करो, ये इसमें डिपेंड हो रहा है। देखो ये वैल्यू है, ये दोनों, दिस इज इवन। इवन का मतलब इसी को, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड ई, राइट हैंड साइड ई, अपन E1 T1 ऐसा मान लेते हैं, और देयर इज नथिंग हियर। दिस इज डिपेंड्स ऑन दिस, दिस इज डिपेंड्स। देखो इसमें इसका वैल्यू इससे कॉपी कर रहे हैं, लाइक दिस। रूल्स देखो, रूल्स कैसा हो रहा है, रूल्स आर लाइक दिस, दिस वैल्यू इज कॉपिंग टू दिस वैल्यू इज कॉपिंग टू दिस। दैट्स वाई अगर आपको राइट साइड वैल्यू पता चलेगा तो लेफ्ट साइड वैल्यू पता चलेगा। सो दिस वैल्यू जो है यहाँ पे डिपेंड हो रहा है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन दिस। राइट, सो फर्स्ट तो आपको इसका वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट लीव से मिल रहा है आपको, वैल्यूज लीव से मिल रहा है। सो फर्स्ट टेक दिस वैल्यूज। कभी आप कौन सा प्रोडक्शन, सी हियर, ऑब्जर्व दिस वन, ये प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं मैं। इसका वैल्यू, नंबर वैल्यू जो है वही एफ वैल्यू है। ये क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है, नंबर वैल्यू जो है, नंबर वैल्यू 2 है, उसी को यहाँ पे असाइन कर दो। वट एवर द नंबर वैल्यू इज देयर, दैट वन यू असाइन हियर। Then see here, T to F, T to F, दिस इज अ रूल। F वैल्यू जो है T वैल्यू में असाइन कर दो। F वैल्यू क्या है, 2 है, ये T वैल्यू में असाइन कर दो। कभी आप प्रोडक्शन टच कर रहे, इफ यू टच एनी प्रोडक्शन, इट्स रूल भी एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है, इज इट क्लियर? राइट, देन E to T, E to T, सो T वैल्यू जो है वो E वैल्यू में, T वैल्यू इज 2, E वैल्यू में, दिस वन। So whenever you are using this, T value को assign कर दो, this is, ठीक है। In the same way, this F value 3 here, T to F, this is 3, this is 5. And whenever you are using this production, T to T ampersand F, ये इसका रूल क्या बोल रहा है? All of you are getting this?
समझ में आ रहा है ना? जस्ट कॉपी ऑपरेशंस, बस कुछ नहीं. राइट. यहाँ पे व्हाट इज दिस? कभी अपन ये प्रोडक्शन यूज कर रहा है तो ये रूल क्या बोल रहा है? दिस इज T1, राइट साइड वाला जस्ट डिफरेंशिएट, लेफ्ट साइड T राइट साइड T डिफरेंशिएट करने के लिए इसको T1 मान सकते. सो एज पर दिस T1 वैल्यू प्लस F डॉट वैल्यू जो है असाइन दिस वन टू T डॉट वैल्यू. सो व्हाट इज T1 वैल्यू हियर? दिस इज 3, this is 5. So he is saying just add these two. The rule is saying add these two, that becomes T value. So this is 8 जो है, this is here 8. Okay. So once then I am using this production A2 ही HT, ये production use कर रहा हूँ. तो what is this it is saying? तो this is E1. So इसका value पता है 2. This value is known 8. Just multiplication of these two, that is 16. So multiply these two, whatever we are getting 16. So that will be our E dot value. So this is 16 here. ठीक है. And then अगर इस actually we want this value. So we want this. So here it is 6. Here it is 6, 4. Then whenever we are using this production T2 T ampersand F, this one, so add these two, that is 10. This value is 10. Now we have this value is here. So final root value चाहिए अपन को. This is 10, this is 16, and this is 10. So what is saying? Multiplication. So multiplication of these two equal to 160. So the value of this is nothing but, so answer this question is 160. Whenever any SDT is given, कभी SDT दिए तो, so the only way is just कभी आप पार्सिंग के अकॉर्डिंग देखो कौन सा प्रोडक्शन यूज कर रहा है, उसका रूल, प्रोडक्शन आर यूजिंग, उसका रूल अटैच कर दो, दैट इज SDTs. So SDTs इज वेरी इजी. SDT कभी यूज करना है बहुत इजी है. आप एक काम करो, पार्स ट्री बना लो, पार्स ट्री बना लो. पार्स ट्री बना के ये जो इनपुट देता है, इनपुट का पार्स ट्री, देन कौन सा प्रोडक्शन आप, किसका वैल्यू चाहिए, which production you are using, execute that rule, which production you are using, execute that rule. This is the way of handling SDTs. Okay, right. So semantic analysis पूरा हर एक any requirement है SDT, any requirement, intermediate code generation SDT. So overall concept is SDT here. Okay, so with this our concept of SDT is also completed. So in this course I think parsing and SDTs क्रैश कोर्स है ना, अपन जितना पॉसिबल है उतना हैंडल कर लिए. सी यार गेट पॉइंट ऑफ व्यू आप मेनली कहाँ पे फोकस करना है, मेनली फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है लेक्सिकल एनालिसिस में मेनली 2 थिंग्स, टोकन्स, दैट इज नंबर ऑफ टोकन्स, लेक्सिकल एरर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बस है. क्वेश्चंस आने का चांस गेट में है ना, नंबर ऑफ टोकन्स का जो है एंड लेक्सिकल एरर्स. नेक्स्ट फ्रॉम पार्सिंग, LL1 ग्रामर डिटेक्शन, एंड पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन. ये दोनों से LL1 से आने का क्वेश्चन है. LL1 ग्रामर कौन सा है? See here, I'll come for that. So बस just wait, I'll come for that. So LR में
देखिए एलआर पार्सर्स में टेबल कंस्ट्रक्शन लेस इंपॉर्टेंट, एलआर ग्रामर डिटेक्शंस। एलआर ग्रामर डिटेक्शन, इसमें एलआर 0 ग्रामर, एसएलआर 1, CLR 1 and LALR 1. So these are the most important chapters, and from 3 SDT, syntax directed translation. इसमें ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस 80% ऑफ द क्वेश्चन यहीं पे आएगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में बेसिक ब्लॉक्स, डेटा फ्लो, वो पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाइलर। एंड ज़्यादा है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के सॉल्व ऑल PYQs, PYQs सॉल्व कर लो प्रीवियस। ओके, PYQs से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर PYQs आपको बन रहा है, यू विल गेट गुड स्कोर, आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा गेट में। PYQs पूरा सॉल्व करना है कंपाइलर, स्पेशली कंपाइलर में। ओके, PYQs अच्छा सॉल्व करे तो ज़्यादा आपको हाई स्कोरिंग करने से चांसेस है ये सब्जेक्ट से। ओके, so that's all from my side. So any doubts from your side, please tell me. So now it is a questions time. तो आपका प्रिपरेशन रिलेटेड, कंपाइलर रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन। मैं आंसर करता हूँ, जस्ट आप किधर भी डाउट्स है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ दिस वन, प्लीज आस्क मी। देखिए सी, ऐसा नहीं होता है IIT रुड़की डिफिकल्ट देता है, ऐसा नहीं। सो दैट इज डिपेंड्स ऑन गेट पैनल, पैनल ऑफ फैकल्टी रहेगा, वो लोग डिसाइड करते। सो यू फॉरगेट अबाउट दैट, कौन सा IIT कौन सा डिफिकल्ट देता है, कौन सा IIT कौन सा इजी, बेटर डोंट फोकस ऑन दैट। आप है ना पूरा कॉन्सेप्ट में प्रिपेयर हो जाओ। अगर डिफिकल्ट दिए, सभी को डिफिकल्ट होता है, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक्चुअली डिफिकल्ट देना है अच्छा है, ईजी है तो ज़्यादा मार्क्स आने से भी अच्छा रैंक मिलेगा। थोड़ा डिफिकल्ट आने से बेस्ट है, मॉडरेट आना तब अच्छा है पेपर। तो सीरियस स्टूडेंट्स है उनको अच्छा रैंक आएगा। सिंबल टेबल कुछ नहीं, सिंबल टेबल इज सिंपली a data structure which contains information about identifiers and constant। ये डेटाबेस है, आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होते रहेगा उसमें। सिंबल टेबल कंस्ट्रक्शन जो है ना, लेक्सिकल एनालिसिस में होगा, सिमेंटिक एनालिसिस में भी होगा, लाइक दिस। वो भी उसके लिए भी कुछ SDT कॉन्सेप्ट्स भी यूज करते हैं। सी हियर ऑल ऑफ यू, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है ना, यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम चैनल में फॉलो करो। आई थिंक आप कुछ भी थ्रू आउट गेट प्रिपरेशन तक कुछ भी डाउट्स है, आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एट वेंकट सर PW टेलीग्राम चैनल। ओके, सो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर थ्रू दिस। ओके, सो इट्स नॉट दैट कोर्स कंप्लीट हो गया, आप ऐसा नहीं कि आप यू कैन नॉट कनेक्ट विथ मी। सो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल मैं रेगुलर है ना इसमें टच में रहता हूँ, स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियर करते रहता हूँ चैनल में। तो आप लोग कुछ डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड, आप यहाँ से कनेक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट्स। ओके, लाइक प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी डाउट। ओके राइट, ओके स्टूडेंट्स, देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
प्रिपरेशन अच्छा करो. सो हार्डली 1.5 मंथ है ना, 1.5 मंथ अच्छा प्रिपेयर करे तो इट्स सफिशिएंट. रिविजन, देर आर मेनली टू थिंग्स. एक रिविजन है दैट डिसाइड्स योर रैंक 40%, रिमेनिंग 60% प्रैक्टिस. तो यहाँ पे सिर्फ ये 1.5 मंथ में क्या करना है, जस्ट 2 थिंग्स करना है, ज़्यादा नहीं. 1, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस. प्रैक्टिस क्या करना है, ओनली क्वेश्चंस. एक टॉपिक ले लो, लाइक पार्सिंग ले लो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो. लेक्सिकल एनालिसिस ले लो, 10 क्वेश्चंस. एसडीटी ले लो, 20 क्वेश्चंस. ऐसा कीप ऑन डू प्रैक्टिस एंड कीप ऑन डू रिविजन. रिविजन, प्रैक्टिस, ये 2 ही थिंग है आपका रैंक डिसाइड करने वाला. ठीक है. सो एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन, डाउट्स कुछ है तो गाइडेंस आपको कुछ चाहिए, just connect with me through this telegram channel. Okay then, thank you all the best once again. Bye bye.